we'll just change some settings and I think we should be good to go. Good evening, sir. Good evening, Sonali. Sonali. Hi. Yes, sir. Just some few information to all students. Basically, we have repeated this many times. Whenever you are going for examination, please do take care of yourself. Do carry mask, extra mask with you. All the documents. Sanitizer is very important. Do carry sanitizer. Do take care of yourself and please follow social distancing protocols. Please do maintain that and take care of yourself. All the best to all the students for examinations. JEE exam has started from today. NDA exam is coming up on 6th. So all the best to all the students for your examination. And one more information to all the students who have taken admission with us for 11th standard. We are going to have parents-teacher meeting. Please pass on this message to your parents also. We are going to have parents-teacher meeting on 5th of September. 5th of September, 4 to 5 o'clock. We are going to have parents-teacher meeting. And we'll be covering all the important information that we need to communicate to parents during that time on 5th of September. Mostly about subjects, which all subjects you will be having, about the syllabus portion, books, which books you should refer for your preparation of 11th standard. So books, about books we'll be communicating to you, and about syllabus, subjects, everything. And any queries, whatever parents will have, we'll like to address those queries also. So please pass on this message. We are having parents-teacher meeting on 5th of September, 4 to 5 o'clock in the evening. Thank you, sir. Thank you, Sonali. Churchill, sir. Yes, thank you so much, Sonali. Sonali, I hope I'm audible to you. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Right. Hi, everyone. People, so today's session is about how do we help prepare people for JEE and NEET along with NDA, because a lot of people have this misconception that NEET classes is exclusively only for NDA. No doubt that NDA is one of our forte, but we do not only deal with NDA, we also coach students for JEE, NEET, and a lot of other entrance examinations. These are just some of them, okay? But today's highlight is primarily for JEE and NEET, right? So we have first, the structure of the session would be that we are going to start off with first JEE paper pattern, how many marks, how is it, and what are the details. Then we'll talk about NEET, and finally we'll come to our schedule and how do we manage to teach everything within the same day and how effective it is, right? That is the basic premise of the session. At any point of time, if anyone of you have any query or question, please, I'll request you to please write it in the chat box. JEE Main Examination, by the way, before I start with JEE Main Examination, I'm sure all of you know this, but I'll still like to recap it once for the sake of everyone, right? JEE Main Examination is generally attempted by about 12 to 13 odd lakh students across India. This is the first stage of the examination, and with this examination you could get admitted to any of the colleges across the country. So this is a national level examination. Having said that, if you are aiming for IITs, then you need to qualify in the JEE Main Examination. So the first stage is called as the JEE Main. You need to be able to qualify for this and then appear for the JEE Advanced. So out of the 12 odd lakh students who appear for JEE Main, there's about approximately 2 to 2.5 lakh students who are selected for JEE Advanced. Out of that, there's a top 30,000 students get ranked. And in those 30,000 students, the top 13,000 students are placed into IITs. And the remaining goes to NIT or any other government college. That's a very broad or approximate numbers that I'm talking about here, but that's what we are looking for. Why is IIT important? IIT is very important because once you get there, there's a lot of things that could happen. It's one of the most premier institutes for engineering. NEET is the only examination in the country
for medical. If you want to become a doctor, right, in any form of medicinal capacity, NEET is the examination for you, apart from pharmacy. Correct. So if you want to get into a private college, if you want to get into government college, or if you want to get into AIMS, you need to appear for NEET. NEET basically stands for National Eligibility Cum Entrance Test. Obviously, the subject combination for NEET would be PCB, that is physics, chemistry, and biology. Even AFMC, for getting into AFMC, which is Armed Forces Medical College, you need to appear NEET. If you want to get into AIMS, AIIMS, which is All India Institute of Medical Sciences, which is the premier most institute for medicine in India. If you want to get there, the examination is NEET. So if you want to get into medicine, you're sorted. You just need to focus on one examination, NEET. But if you want to get into engineering, there's two primary examinations that you need to be focused on. One would be the Maharashtra State Technical CET, Common Entrance Test, and the other one would be the JEE, right? So when it comes to JEE, obviously the exam mode is computer-based test, right? In fact, right now, from the 1st, today is the 1st of September, from the 1st till the 7th, I think the JEE examinations, JEE main examination is being held all over the country, right? Right now, due to COVID and due to Corona pandemic, what is happening is they're keeping it in multiple shifts, and the number of centers have been increased. Earlier, there were only some, limited number of centers that were appointed for the conduction of this examination. But now, as we know, the new norm is to maintain social distancing. Based on that, we need to, hence the government or the NTA is the National Testing Agency. They are the ones who conduct the JEE examination. They have decided to, have multiple centers and have less number of students per shift. Sorry. The exam duration is 3 hours for the entire examination. JEE examination is basically PCM, physics, chemistry, and mathematics. 4 hours for any person with benchmark disability. And so any disabled person writing this examination, they will be given some additional time. But normal people like you and me will be given about 3 hours. The total number of questions for JEE main would be about 75 questions, 25 questions per subject. 3 subjects, 25 each, the total comes to 75. Type of questions, this changed this year, right? By the end of last year, this changed actually, that there will be 20 MCQ questions. MCQ basically is multiple choice questions, and 5 numerical questions. For the 20 MCQs, you have negative marking, and for the 5 numerical questions, you do not have any negative marking, right? Keep this in mind. Previously, what used to happen, there used to be 25 MCQs, no separate numerical questions, and all of them used to have negative marking. Now, the students, I would highly recommend you to attempt these 5 numerical questions, because even if it is wrong, you're not going to get a negative mark, right? So that's what the marking scheme is basically. So for MCQ, for every right answer, you get 4 marks. For every wrong answer, you get -1, right? So you need to be very clear before you're, marking out your answer. I understand we need speed as well as precision. Only precision wouldn't work. If you're just being very precise and if you don't attempt the remaining set of questions, it doesn't make sense. So you need to be able to, write and be quick about it. Maximum marks for the JEE paper is about 300 marks. And if you want to get qualified, normally what we are looking for is about 180, 150 at times, but it varies. There's a percentile method. There's a difference between percentage and percentile. If you're in the top percentiles, you'll obviously be selected for the JEE Advance. Medium of the paper would be primarily it is English and Hindi, English or Hindi for that matter. Usually the paper comes in 2 languages, that is English and Hindi. Candidates from Gujarat, Daman and Diu, and Dadra and Nagar Haveli can also opt for Gujarati as well. There is one choice of Gujarati, right? No other languages. Correct. Obviously, this is a subject-wise bifurcation of the number of questions, the paper pattern, and
how many answers that we are looking for. So mathematics, 25 questions, 20 questions, MCQs, 5 questions numerical, right? Same with physics, same with chemistry. Now they have, I've written about 2 shifts over here, but I think there are about 3 shifts in which the examination is happening this year at least, right? JEE main paper pattern. This is paper 2. Understand JEE main happens for 2 papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 is your normal engineering, whoever wants to get into any form of engineering, be it electrical, mechanical, any other thing, they should opt for paper 1. But if anyone is interested in architecture or planning, right, they are supposed to appear for paper 2. Now, the paper 2, what happens, one difference between paper 2, one big difference between paper 2 and paper 1 would be paper 2 has this written examination plus a drawing test. There would be a drawing test as well, because if you want to become an architect, you need to have your proper dimensions analysis, and you should be able to make drawing as per a particular viewpoint and stuff like that. So that is also there. For paper 1, the maximum marks were 300, and for paper 2, the maximum mark is 400. Bear this in mind. If you don't want to go through, if you want to become an architecture, but if you're not interested in appearing for paper 2, there's one more examination called as NATA, N-A-T-A. Again, there's a written examination and there's a drawing examination. So they together combine and it becomes NATA. There are some IITs who offer architecture. So if you're obviously at the end of the day, if you become an architect from IIT, it's always a very prestigious thing, right? So the idea should be that we are trying to, get your graduation done from the best of the institutes, right? The subjects obviously for architecture would be mathematics, general aptitude and drawing skills. And for planning would be mathematics, general aptitude and planning, right? The number of questions, mathematics will have the same like JEE main paper 1, 20 MCQs, 5 numerical. Aptitude will have 50 MCQs and drawing test will have 2 questions. Okay. With B plan, with mathematics, again, you have 20 MCQs and 5 numericals. Aptitude will have 50 MCQs and planning will have 25 questions. The marking scheme stays the same. For MCQs, +4, -1. For answers with numeric value, +4 if it is right and 0 mark for incorrect. There's no negative marking. Right. And also, if you talk about marking scheme for drawing test, there are 2 questions to be evaluated out of 100 marks. So the remaining 100 marks is for your drawing examination, basically. Right. So whatever you score out of it, that is it, basically. Right. That's the basic bifurcation that I was talking about right now. Just give me a second, guys. There's some commotion. Right. So when I'm talking about B planning is basically when you're planning a town, you're planning a city. It's excellent for that. It's very good for that. Right. What percentile is required to get into good NIT? Basically, Raj, if I will, top 13,000 हो जाते हैं ना selections, उसके बाद वाले बच्चों NIT के लिए select हो जाते हैं. So that depends on the number basically. Okay. Highlights for NEET. Right? As I said, JEE basically was for engineering and NEET is basically for medicine. So for NEET, it's an offline mode. There's no online test that happens for NEET. Correct? Medium of language. Acha. Now look at this. Look at the contrast between JEE examination and NEET examination. JEE was available in practically 3 languages, I'll say. English, Hindi, and Gujarati. For NEET, we have languages such as English, Hindi, Marathi, Bengali, Gujarati, Tamil, Telugu, Kannada, Oriya, Assamese, as well as Urdu. So there's a multitude of languages that are available for NEET, right? Types of questions of the duration of the examination is still 3 hours, right? Multiple choice questions.
The total number of questions for NEET is 180 and the total marks is 720 marks, right? There would be negative marking. Marking scheme is same, +4 -1, and total sections in the paper would be 3. For NEET, it will be physics, chemistry, and biology. From biology, again, it will be divided as botany and zoology. So that is the basic bifurcation of it, right? Right. So again, physics is 45 questions, chemistry is 45 questions, bio is 90 questions. Those 90 questions is basically, which is about 45 for botany and 45 for zoology. Subject-wise weightage has been given over here. Physics, 45 questions is for 180 marks. Chemistry, 45 questions for 180 marks. Bio, the total bio would be about what? Botany, 45, zoology, 45. So that's 180 and 180. So the total marks comes out to be 720 marks, right? If you want to get into a good government college, ideally you should try scoring somewhere near 500. It is not necessary कि 500 मिला तो हो जाएगा, but ideally that's a good mark to target. If you were to be somewhere near 500, you should be able to be there, right? Having said that, I think I've already discussed this with you guys. Marking scheme. I'm sitting here. Marking scheme, as I said, 1 mark is deducted for every incorrect answer. No marks will be deducted for questions which have not been answered. So if you're not sure about something, it's better to leave that rather than getting a negative mark for that, right? Important points to remember while marking the OMR sheet. इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बड़े बच्चे भी गलती करते हैं, छोटे बच्चों का तो छोड़ ही दो, ठीक है? You cannot cancel out. Once you've filled up a bubble, you cannot cancel it out. I mean, that's a very straightforward thing. वो सीधा point cancel हो जाता है. I have seen a lot of kids, even 12th graders, when they cannot fill a bubble properly. ये सबसे बेसिक एलिमेंट्री चीज होती है जो बच्चों को हम नर्सरी में या किंडरगार्टन में हाथ पकड़ के एक लाइन के अंदर जो कलरिंग करना सिखाते हैं, बट 12th स्टैंडर्ड में बच्चे ये गड़बड़ करते हैं. So please remember that answers have to be marked using a ball point pen. No gel pen, no fountain pen, nothing of that sort. Okay. Why not gel pen? Why not fountain pen? Because the ink is a bit more liquidy, and because of that, what happens, it doesn't instantly dry. And while collecting the papers, your hand, it could smudge out. See, understand OMR sheets, the full form of OMR is optical mark reader, right? So it goes into an OMR scanner where it is not manually checked, but the machine checks the answers. So if there's any smudge, if there's any blemish, if there's any of those sort of things, the machine outright rejects your paper, right? Hence, you need to make sure that it is very clean, and the bubbles that you're filling up has to be very precise. Changing of answers on OMR sheet is not allowed. Before you confirm, put the answer on the form, verify it again. Because once you have put an answer, you cannot change भी कर लोगे तो marks नहीं मिलने वाला है. And if you say, if you were to ask the supervisor to give you a new OMR, वो भी possible नहीं है. So before you commit an answer on the OMR sheet, verify it twice, verify it thrice before you do it. Only when you're 100% sure, then commit to that, right? Again, understand, a lot of students don't understand this part, okay? Erasing or obliterating, obliterating is as in erasing anything out, any information that is printed on the OMR sheet is a punishable offense. मतलब उसको पुलिस उठा के लेके जा सकता है. Right? It is actually a punishable offense. So do not do that. Rough work should be done on the textbook test booklet only and not on the backside of the OMR sheet. नहीं चलेगा. For these tests, you get a proper booklet. जो paper होता है, question paper, it's a sealed booklet that you get.
There will be a blank page in the test booklet. You should do the rough work only in that booklet and nowhere else. A candidate must not forget to mark the test booklet code on the OMR sheet. This is one more thing. There was a student of mine who happened to forget doing this. उसने सब कुछ कर दिया, बोला ये मैं लास्ट में करता हूँ, but लास्ट में टाइम बचता किसके पास है? लास्ट में टाइम बचता नहीं है, and then what happens because of that is he forgot to mark the test booklet code, उसका scores ही नहीं आया. Right? What is the test booklet code? Every test booklet has a code written on top of it. उस चीज को, वो इंफॉर्मेशन को OMR में मार्क करना होता है by filling those bubbles, right? Like this, the child has to, revise these points again and again, like you revise an answer, so that you don't forget, and especially make a mental checklist. Okay, these are the points. Have I gone through it? Have I gone through it? Only when you understand this, that you. Otherwise, what will happen is you're working hard for 1 year. You're working so hard, and you make one mistake, and everything is gone. वैसा नहीं होना चाहिए ना. Okay. I'll give a sample schedule, and we'll talk about how do we go about dealing with JEE, NEET, and other things, right? As well as ND, obviously. Correct. And also Anish would be pitching in between, I'm sure, right? This is a sample schedule that I have, that is over here. It's, I've taken it from a random 11th standard sample schedule. Now, if you notice that the lecture starts at about 6 in the morning, and the last lecture ends at around 10 in the evening, night, I would say rather. From 6 to 6:40, the first lecture is biology. 6:40 to 7:20, it's chemistry. 7:20 to and 8 a.m. is physics. These three subjects, biochemistry and physics, that we teach is exclusively NEET syllabus. And we teach it from the NCERT book, right? I'm seeing the entire day at Ani's classes when we are exposing a child for curriculum for NEET, we're exposing a child for curriculum for JEE, and we are also exposing the child for the NDA curriculum. So we try to weave in together. Half of the children won't even know that they are attending NEET wala session and JEE wala session, because it really helps them. See, it's always important to have plan A, plan B, plan C. एक backup plan नहीं चाहिए, backup का भी एक backup चाहिए हमेशा, if you want to do something good in your life, right? So the first slot that you could see in, I would call it as yellow, I'm not sure what will you call it as, that is basically for the NEET syllabus, which is taught with the NCERT thing. After that, if you notice, we start immediately, once physics is done, we start with math. We do recommend the bio students also to learn a bit of math. Maybe they would not have taken mathematics as the subject, but I will still recommend them to, know basic maths and, basic things that they need to solve numericals of physics and chemistry. Because a lot of times what happens, students who are opting for bio, students who are opting for, they know that they want to go for NEET, they outright reject math. Don't take math as a subject if you want, but do learn mathematics. Why is it important? So if you don't learn mathematics, 50% of your physics is already gone, because you cannot do physics without mathematics. Similarly, the numericals of chemistry will also be gone if you don't do your mathematics. And what happens, and I have heard people saying that nahi sir, bio में बहुत ज़्यादा score कर लेंगे हम लोग, ठीक हो जाएगा. यार ऐसे नहीं होता है, खाली bio में बहुत ज़्यादा score. You need to have an overall score also ना. उसी जगह पे if you were to do that mathematics for physics only, you'll be able to get a good marks. I'm not saying you should take math. Don't take math officially. Substitute it whatever options you have. If your college offers you geography, go for it. Not an issue. If they offer you some other, computer science, IT or whatever, go for it. But then learn math at the same time. About 80% of the people who are opting for NEET do not take math, and they go through this humongous task of understanding physics, and बाद में they complain sir physics समझ में नहीं आता है. I'm saying physics because I'm a physics teacher, but then you'll understand physics when you understand math. Otherwise, it's a pretty difficult task. That's why if you look at our schedule, we have not just randomly put teachers किसी भी order में, right? Immediately physics खत्म होने के बाद we have math lectures, 2 math lectures हैं. So that if the NEET guys also want to attend math, they could be done by 9:20 and they're done. Khalas, right? And this section in light blue color, what you see is basically what we ask our India guys
right? But then that doesn't mean वो yellow वाला part is not for NDA, guys. That will also help them because bio उनको भी होता है. NDA में I think there's about what 10 questions for biology, 15 questions for biology, right? So उनके भी काम में आता है. So यहाँ पे if you see then this entire is current affairs है, test break वगैरह जो भी है. And finally coming on to the green part, which is basically JEE main, right? So again, this is taught from the state board books. Why that distinction? Why that distinction between state board and this? See, the state board book is already upgraded to a level where it is at par with the NCERT book. So this chemistry that, if you could follow my cursor, from 7:30 to 8:10 chemistry, 8:10 to 8:50 physics, and 8:50 to 9:30 mathematics. These three are taught from the state board books, right? And finally, 9:30 to 10 is a common lecture for everyone to attend. It's a very fun lecture. It is on multiple intelligences because there are multiple teachers and students. There's a continuous interaction that happens in this 9:30 to 10 p.m. lecture. Why did we even put our schedule? This is a sample schedule. Why did we even put it over here, right? This was to address because a lot of people believe that we only teach ND and we do not teach anything else. This is a myth. This is an absolute myth. We teach for all possible entrance examinations, right from first standard till graduation. And it is important to learn these things together. What happens is you're having a backup. So what a lot of times when the guy is in 10th standard, probably they're not very sure as to what they need to do. Like they may end up saying, oh, I think I want to do engineering, right? They may assume that. But only when they understand, see the level of physics, the level of mathematics, and the level of chemistry in the 10th standard and in 12th standard is diametrically opposite. 10th standard is what? The syllabus, the entire syllabus of 10th standard state board could be over in 500 hours. But for physics, only physics for 11th standard and 12th standard, that is about 600 hours. There's a huge jump over there, right? So a lot of times when a child comes to 11th and 12th standard, when they start studying, they understand, acha, isme ye hota hai. I often counsel students, they say, I want to be an engineer. What do engineers do? They don't know. Engineer बनने का, क्यों बनने का, सब लोग बन रहे हैं इसलिए बनना है, right? It shouldn't be like that. A child should be able to understand क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे करना है. Similarly, a lot of people want to get into just medicine. क्यों bio पसंद है? अरे bio पसंद है तो और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है. You could get into research, you could get into pharmacy, you could get into genetic engineering, you could get into so many other things. So a child should be aware about the possibilities, and this schedule, it helps the child because there's all possible stimuli in this particular schedule. So the child is aware about everything, so they could make a very informed decision. That's one important thing that I wanted to address. I think Anisa would like to add in something. I'll just check if he's available. Just a second. Also, okay, someone asked me a question. This rules are same as well as 10th board examination. Board examinations basically have very similar rules, but in board examinations for your 10th standard, it was mostly of a subjective nature. It was not an objective nature. So there was no OMR filling for that, right? So that challenge was not there in front of the children. Kaise badna hai, kya karna hai, and all that wasn't there. But with competitive examinations, most of the competitive examinations, this would be there. I think with RIMC you'll have subject written examination. बाकी का भी वो है. A classic example of difference between JEE Math and NDA Math is something like this. If you notice, JEE Math has 25 questions from mathematics, right? And if you're to estimate, you have about what total of 75 questions for 3 hours. You get per question, you get 2.4 minutes. So that's about 2.5 minutes, right? At the same time, for NDA mathematics, you have 120 questions, and per question you get 1.25 minutes. So if you're to go head to head with subject to subject over here, then NDA ka math is much more difficult than the JEE ka math. And we have always been hearing that JEE is the most difficult examination in India. Some people say even in the world, but that's not true. As Anish says, and I'll also like to highlight, Gaokao is one of the most difficult examinations in India. It's basically Chinese math. A lot of people know it as Chinese math. And RIMC ka jo mathematics jo questions hote hai,
that is a better examination than any other examination in India, because it has a lot of syllabus. The scope is very huge, and the scope is very wide, right? So that is what we need to look into. Similarly, if you have to compare other subjects, right? If you have to compare other subjects over here, see basically यहाँ पे bio जो है हम लोगों का सुबह I think सना मैम पढ़ाती है, केमिस्ट्री ये शौकत सर पढ़ाते हैं, फिजिक्स असद सर पढ़ाते हैं, ठीक है। मैथ ये वाला जो मैथ है नीचे ये अरबाज सर पढ़ाते हैं, फिजिक्स असद सर ही पढ़ाते हैं, और केमिस्ट्री यहाँ पे शौकत सर पढ़ाते हैं, राइट। सो वहाँ पे टीचर्स भी हमने ऐसे दे रखे जो बहुत एक्सपीरियंस है। अभी असद सर के बारे में बोलूँ तो असद सर हैज बीन टीचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द लास्ट 4 years 5 years. Shaukat sir has cleared his set net. I think he scored rank 1 in his set net. Like it's so difficult to find a teacher who has done set net, and he scored rank number 1. He trains teachers for set net examination. Imagine that teacher is teaching you chemistry. Similarly, मैथ के लिए अरबाज सर है, यहाँ पे दूसरे उदय सर है आपके पास, बाकी के मैथ के टीचर यहाँ पे अरबाज सर है, and all of them individually are very excellent teachers, right? Anyone has any queries or questions so far? Hi, anyone has any query, any questions? Someone has just asked me, should we be preparing for both NEET as well as JEE? Focus one, but I think you should be in a place to, एक पे दो कश्ती पे सवार मत रहो. Try to, build up only for one. Either start preparing for JEE or NEET. दोनों करोगे तो it's a very challenging task. It's a very challenging task. I think I have Mr. Anis Kuti with me. He would like to add some things to it. Right. Just a second. I can continue. Thank you. Okay. Just a second. Anis will take over. So finished everything. Last slide, next slide, maybe. But thank you. अच्छा चलो लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ भाई, इसको लिख नहीं पाएगा, कैन आई राइट? नहीं किया है, कनेक्ट करता हूँ. इज इट पॉसिबल टू राइट? I am not sure. Let me check. Wait. अनएडिटेड तो है. इधर हो गया. इट्स कमिंग. नो कनेक्ट तो दिख रहा है. हाँ Annotations पे जाना पड़ेगा आपको. आई एम नॉट एबल टू गो. Annotation. Leave. No. क्या बच्चों लोग, तो तुम लोग जो सामने बैठे 12th वाले हैं ना? कौन है 12th वाले? अब्दुल्ला. हाँ 12th वाले तो उसके बाद जा सकते, लेकिन इसको सोहेल को बुला था. एनी क्वेरीज दैट यू वांट टू आस्क? सिट चलो ये चैट बॉक्स से बना. सर वो जेई का सर टीएस एंट्री बताओ ना सर, वो टेक्निकल एंट्री का जेई वाला, वो कट ऑफ का. आगे सब नहीं दिखता. निकाल दो इसको. टेक्निकल एंट्री के बारे में बताता हूँ. नहीं है ना? मेरे को नहीं लगता है एप्पल दूसरा कोई चीज देता है. चाइना. It's okay. I wanted to write. ये आ रहा है बट जुनून चलो नहीं हो रहा. चलो जो टेक्निकल एंट्री के बारे में ना, मैं इसके ऊपर लिख नहीं पा रहा हूँ. नहीं लगे उस पे चालू है ना, सुनना उस पे चालू है ना. 3 टेक्निकल एंट्री है बच्चों लोग, एक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का. एयरफोर्स का जो टेक्निकल एंट्री है ना, नहीं इट्स ओके, आई डोंट वांट टू. एयरफोर्स का टेक्निकल एंट्री चैट बॉक्स में लिखो. एयरफोर्स के टेक्निकल एंट्री में नहीं चाहिए. एयरफोर्स के टेक्निकल एंट्री में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गवर्नमेंट ने भी इसको क्लैरिफाई नहीं किया, वो एनडीए के जो टोटल 400 सीट है उसी में से आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है.
लेकिन है अभी ये बार एयरफोर्स का भी टेक्निकल एंट्री रखा है उन्होंने, पर एयरफोर्स में टेक्निकल एंट्री को कैसा डिटरमाइन करेंगे अभी तक डिसाइड नहीं किया। सोनाली मैम है क्या, बोलो आवाज देना, सोनाली मैम को आवाज देना। हाँ, नेवी टेक्निकल एंट्री का JEE के थ्रू ही जाता है। सोनाली मैम, नेवी का टेक्निकल एंट्री JEE के थ्रू ही जाता है, और वो JEE के थ्रू जब जाएगा ना, एयरफोर्स का टेक्निकल एंट्री के बारे में कुछ बोल सकते क्या है? अभी मतलब जो 400 सीट है ना अपना, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ मैं, 400 सीट में से कुछ सीट उन्होंने रिजर्व किया है इस साल। हाँ, लेकिन वो कैसा देंगे उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया। हाँ, तो वो एनडीए के बेसिस पर ही है। पहले एयरफोर्स में कम सीट्स थे, अभी ज्यादा सीट्स कर रहे हैं। लेकिन आर्मी का टेक्निकल एंट्री है ना, उसके लिए आपको 12वीं के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए। कितना मिनिमम कट ऑफ कितना है? 75%, 70-75%। और नेवी के कट ऑफ के लिए, नेवी में आपको बोर्ड एग्जाम में भी 70 चाहिए कंपल्सरीली, और JEE के स्कोर के हिसाब से आपको कॉल लेटर आएगा। हाँ, कॉल लेटर आएगा। JEE के जो एग्जाम होता है ना, 2 बार होता है। JEE भी जनवरी में भी होता है और अप्रैल में भी होता है। वो जो मार्क्स है वो, और आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कम से कम 70% चाहिए PCM में। और वो ओवरऑल का जो है ना, वो बोर्ड एग्जाम का या आर्मी के लिए होता है, और एयरफोर्स के लिए भी होता है, लेकिन उसके बारे में क्लियर मेंशन नहीं हुआ है। कोविड हुआ करके उसके बारे में बताया नहीं, लेकिन लेने वाले इंडिया में। इंडिया में जो सेलेक्ट होता है ना, कुछ बच्चों को, टॉप क्लास बच्चों को टेक्निकल एंट्री देने वाले वो एयरफोर्स के लिए। सही है? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? यू कैन आस्क, देयर इज अ चैट बॉक्स। सर TES 44 के बारे में बताओ ना। टेक्निकल एंट्री 44 के बारे में बताओ। टेक्निकल एंट्री 44 उन लोगों के लिए जिन्होंने 12th दिया, उनके ना। हाँ, जिन्होंने बोर्ड एग्जाम नहीं दिया, या जो लास्ट ईयर जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया, उनके लिए। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है पार्थ पवार, तो 11th पे है ना अभी? पार्थ तो 11th नहीं पे सर, है ना? 12th में हूँ। हाँ, तो जिनका 12th होने के बाद की बात कर रहा है। 12th हुआ नहीं ना तेरा? नहीं सर। हाँ, तो उनके लिए नहीं है ये जो टेक्निकल एंट्री सिर्फ उन्हीं के बच्चों के लिए जिनका 12th हो चुका है, और 12वीं के मार्क्स के ऊपर वो उनको टेक्निकल एंट्री है। समझा क्या? हाँ सर। और बोलो, और क्या? सर वो KVPY एग्जाम का सर वो थोड़ा सा क्लैरिफाई करो ना सर। KVPY का हम लोगों ने मेल भी भेजा उनको, सोनाली मैम ने, लेकिन वो मेल का भी रिप्लाई नहीं आया। हाँ हाँ, रिप्लाई किया उन्होंने मेल में कि कोविड की वजह से हमने पोस्टपोन किया, कब लेके कुछ बताया नहीं। सोनाली मैम आपका नंबर लिख लो ना। ये सब देखो क्वेरीज है ना। मैं और सोनाली मैम बैठ के जब सर्जिल बात कर रहे थे, हम लोग 2 मैगजीन पढ़ रहे थे, एजुकेशन वर्ल्ड और पेरेंट वर्ल्ड। हम लोग जितना भी अभी स्कॉलरशिप भी है, बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, उसके ऊपर भी हम लोग बैठ के काम कर रहे थे। तो तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी आएगा तो हम बताएंगे। और सोनाली मैम ने अपना ऑफिशियल नंबर रखा है एडमिट, तो ऑफिशियल नंबर रखने से इजी भी पड़ेगा। और ये भी मैं बात करना चाहता हूँ सोनाली मैम, 5 तारीख को हमारा पेरेंट टीचर मीटिंग है इसी पर, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल आया है कि 21 से चालू करना स्कूल। तो एक हिंट दे देते हैं, वैसे भी हमने 5 को वापिस रखा है, जिसमें सर 21 अगस्त क्या सितंबर? अगस्त तो खत्म हो गया ना मेरे भाई। 21 अगस्त तो गया ना। ओ हाँ, भूल गया था, सॉरी। अभी सितंबर 7 को हम लोग ने सोचा था स्टार्ट करेंगे, पर गवर्नमेंट ने ही ऑर्डर लिया है ऑफिशियली कि 9th से लेके 12th के बच्चे आ सकते हैं। तो वी आर थिंकिंग ऑफ फॉलोइंग द गवर्नमेंट नॉर्म्स। So on that we are going to take a call on 5th of September, where we have kept up parents teacher meeting from 4 to 5, especially for children who have enrolled for us for 11th and 12th. And as said earlier, we will be taking the classes from the beginning. Everything will start from the beginning. ये जो टाइम टेबल है, मैं आपको और एक बार समझाना चाह रहा था। आई थिंक शर्जिल सर ने तो पूरा बात कर लिया कि सुबह जो 6 से 8 है वो हमारा नीट का क्लास है, जहाँ पे हम CBSE के बुक से पढ़ाते हैं। और शाम को जो 7:30 से 9:30 है, आपने देखा होगा, वो हमारा स्टेट बोर्ड का क्लास है, जहां हम स्टेट बोर्ड की बुक से पढ़ाएंगे। 11th का भी और 12th का भी पैरेलल क्लास चलेगा। जो बच्चा 11th का है तो उसका 11th का क्लास चलेगा, और जो बच्चा 12th का है वो 12th का क्लास रहेगा, और वो टाइमिंग सेम रहेगा। बिकॉज उसके बाद जो मैथ्स के 2 क्लास है ना, 8:40 और 8:40 से 9:20, उसमें समझो वो हमारा NDA के लिए है, वो हमारे MHCT के भी लिए। जिन बच्चों ने 12th दिया है और उनकी खुशखबरी है कि कोविड की वजह से उनका MHCT नहीं हुआ,
गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का गवर्नमेंट सीट के अंदर अगर आपको फार्मेसी में भी एडमिशन लेना है तो बोर्ड एग्जाम के ऊपर नहीं मिलता, वो उसको MHCT के ऊपर मिलता है, इंजीनियरिंग के लिए, फार्मेसी के लिए। तो उसका एग्जाम हुआ नहीं, जिनका 12 ही हुआ। तो 6 तारीख को जब एनडीए का एग्जाम खत्म होगा तो उसके बाद भी बच्चे हमारे पास पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम एक बच्चों को प्रॉमिस कर दे, पेरेंट्स को भी, कि जो भी हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं वो 3 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं है। तो वो बच्चा जिसको MHCT के लिए तैयारी करना है, जो 12वीं का एनडीए का एग्जाम देके आएगा, वो हमारे पास पढ़ सकता है इसके लिए भी, क्या, MHCT के लिए। तो ये MHCT के लेक्चर्स होंगे, वो 8 से 8:40, 8:40 से 9:20, इसमें। हाँ, वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि MHCT को 11th का भी आता है, 12th का भी आता है। तो एक लेक्चर में उदय सर अगर 11th का पढ़ाते हैं तो दूसरे लेक्चर में शाहरुख सर 12th का टॉपिक लेंगे। लेकिन MHCT के लिए सब आता ना, 11th का भी टॉपिक आता है और 12th का भी टॉपिक आता है। अच्छा, जो MHCT का टॉपिक है 11th मैथ्स आता है, वो एनडीए के लिए भी आने वाला है, और जो एनडीए के लिए आने वाला है उसमें कुछ सीडीएस के लिए भी आने वाला है। तो कुछ ऐसा अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक से जो पढ़ाई कराएंगे ना हम, क्या आदित्य, उसका टाइमिंग है 7:30 से 9:30। वो पैरेलल चलेगा, 11वीं के बच्चों को 11वीं में, 12वीं के बच्चों को 12वीं में, वो टाइम चेंज नहीं करेंगे। फिर भी लास्ट फाइनल डिस्कशन 5 सितंबर को रखेंगे हम, सदस्य से भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मेरे दिमाग पे है, क्योंकि 9:20 to 10 का जो लेक्चर है ना वो कॉमन होगा, करंट अफेयर्स। उसमें सीडीएस के बच्चे भी आएंगे, आरएमसी के बच्चे भी आएंगे, 11th के आएंगे, 12th के आएंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए कॉमन लेक्चर है। कौन सा? 9:20 से लेके 10 बजे तक का, जो अल्ताफ सर का, वो रिपीट होगा। अभी उसमें हमारा टारगेट क्या होगा? सीडीएस। सीडीएस का एग्जाम कब है? नवंबर में, तो उसका टारगेट होगा हमारा। अवनीश पानी पिला रहे, बॉटल देखो, ब्लैक कलर का बॉटल। फिर 10 से जो 12:30 है वो टेस्ट होगा, कुणाल बहादुर के, वो टेस्ट होगा, वो ऑफलाइन टेस्ट होगा। हम चाहते हैं कि बच्चे लिखे, क्यों अभी बोर्ड एग्जाम है ना, तो बच्चे लिखते नहीं है, तो जब लिखेंगे नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि वो टेस्ट ऑफलाइन टेस्ट हो, तो ऑफलाइन टेस्ट होगा हमारा। अभी वो आरएमसी के नाम से जा रहा है, बाद में स्टेट बोर्ड के नाम से जाएगा। तो एक दिन 11th का, एक दिन 12th का, मतलब रिटन टेस्ट, MCQ नहीं। क्योंकि क्या होता है, मैंने देखा बच्चों को लिखने की आदत नहीं है, तो 10 से 12:30 का जो टेस्ट का टाइमिंग है ना, वो रिटर्न होगा। एडीसी के ऐप के ऊपर दोपहर में रखेंगे, और बाद में ब्रेक देंगे आपको, कि जिसको जो टेस्ट नहीं दिया वो बैठ के सेल्फ स्टडी करे, खाना खाए आराम से माँ बाप के साथ। यहाँ पे भी ब्रेक होता है खाने का। 1 से 2 हमारा बोनस लेक्चर होता है, जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं मेंटल मैथ्स, वैदिक मैथ्स, पावर मैथ्स, सट्टास। तो जो अभी कल भी रात को हम लोगों ने, मैंने और उदय सर ने और आशा मैम ने, अफरोज सर भी थे, इंटीग्रेशन पे नए सट्टे ढूंढे। कौन था कल लेक्चर पे? कोई नहीं था। हाँ, बहुत नया नया सट्टा था, तो वो सट्टे हमने बताया रात को। तो वो पीरियड मैथ्स का रहेगा, वो कॉमन लेक्चर होता है मैथ्स का, बेसिक्स के लिए। क्योंकि 100 बच्चे अगर हमारे पास एडमिशन के लिए आते हैं ना, 90 बच्चों को 1 to 30 का स्क्वायर नहीं आता, तो वहां से हम शुरुआत करते हैं। फिर 2 से 4 है हमारा, वो ऐप के ऊपर टेस्ट होगा। कौन सा ऐप के ऊपर टेस्ट होगा? ADCI। एक दिन मैथ्स, एक दिन गेट। जो हमारा अभी हम लोग सीडीएस, अभी जो नेक्स्ट एग्जाम आएगा सीडीएस का, सीडीएस हमारा टारगेट है। तो सीडीएस को पढ़ाई करना मतलब वो एनडी के लिए पढ़ाई करना, वही है, कुछ नया नहीं है। 4 से 5 हमारे पास 200 टॉपिक है। हम बच्चों को सर्टिफिकेशन भी देंगे जो फॉरेन में पढ़ने के लिए उनके काम आएगा। याद रखो, एवरग्रीन एजुकेशन फाउंडेशन हमारा एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बच्चे लेक्चर्स देंगे हम उनको सर्टिफिकेट देंगे कि इन बच्चों ने वॉलंटरीली यूट्यूब पे 1 घंटा इस टॉपिक पे बात किया था, तो उनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ 200 टॉपिक मैंने डाला है। सदब मैम को बोलो 200 टॉपिक वापस डाले, अभी बोलो, तीनों ग्रुप में डाले। तो जो लोग वॉलंटरीली कोई टॉपिक से बात करेंगे, मैंने तुमको ये भी बोला कि हमने जो टॉपिक दिया वो छोड़ दो, तुमको लग रहा है कि तुम किसी टॉपिक में माहिर हो, उस टॉपिक पे तुम लेक्चर दो। और तुम्हारा लेक्चर हमारे नाम से जाता है, लेकिन यूट्यूब पे जाता है। और यूट्यूब पे जा रहा मतलब ता कयामत तक रहता है, जब तक दुनिया खत्म नहीं होगी ना, यूट्यूब बंद होने वाला नहीं, तब तक वो लेक्चर तुम्हारा कोई भी देख सकता है। तो तुम्हारा पब्लिसिटी मिलता है। तुम किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हैं ना, तो तुमको पूछते हैं क्रेडिट सिस्टम में कि तुमने ऐसा क्या काम किया। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं तुम्हारे को, सारा अली खान का। सारा अली खान का एजुकेशन हुआ है आईवी में, तो उसके बात करने का ढंग देखो तुम, उसको बात करने का ढंग आता है, उसके बात में वजन होता है, इंटेलिजेंट बात करती है। ब्यूटी एंड ब्रेन्स डजंट गो टुगेदर, बट हियर इट गोस, बिकॉज शी हैज स्टडीड इन आईवी लीग। और इंडिया में भी आईवी लीग आने वाला है, इंडिया में बैठ के। अभी एक बात हुआ कि कुवैत में भी हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करें, मतलब ऑनलाइन ही होगा। तो एक ग्रुप ऑफ लोग है जो कुवैत में हमारा क्लासेस चाहते हैं,
तो अभी पढ़ाने का और पढ़ने का तरीका चेंज हुआ है बहुत सारा। तो हम लोग जो नया हमारा ऐप है ना, हम सिस्को और वेबएक्स पे भी आने वाले हैं। जैसा माइक्रोसॉफ्ट मीट है ना, वैसा वो एक चीज है, सिस्को और वेबएक्स, उस पे भी आने वाले हैं। देन नेक्स्ट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज ज्योग्राफी लेक्चर। ज्योग्राफी का स्पेलिंग रॉन्ग है, टाइपो एरर है। 5 to 5:40 में रिंकू मैम रीस्टार्ट करेगी वापस से सीडीएस से। सीडीएस का जो पोर्शन है वही एनडीए का पोर्शन होता है। उसमें हम लोग याद रखो, अभी मैम लिख के लो ये 11th और 12th का जो जिन्होंने ज्योग्राफी लिया उनके टेक्स्ट बुक से पढ़ाया जाएगा। ऐड करो सर। इलेवेंथ और 12th का जो टेक्स्ट बुक है ना उसको पढ़ाया जाएगा। लिखो, मैम को बोलना है, क्योंकि अपने को ज्योग्राफी का पोर्शन है ना, ये पीरियड में जो क्लियर करना है वो 11th और 12th का पोर्शन कंप्लीट करना है। तो 5 से 5:40 पहले 11th का बुक पढ़ाएंगे अल्टरनेट, और एक 12th का बुक पढ़ाएंगे। तो जिन्होंने 12th का ज्योग्राफी लिया ना उनका 12th का हो जाएगा, जिन्होंने 11th का ज्योग्राफी लिया इनका 11th होगा, जिनको एनडीए को पढ़ना उनका एनडीए का पढ़ा भी हो जाएगा। क्या पूछ रहे हो? ये सर अभी डालिया बट को देख के समझ में आ जाता है कि ब्यूटी एंड ब्रेन्स डोंट मैच। यार भाई नो कमेंट्स यार। कभी भी प्रतुम ने पॉजिटिव रहने का, किसी का नेगेटिव तारीफ नहीं करना है। हाँ पीटीएम ऑनलाइन ही रहेंगे भाई, पीटीएम ऑनलाइन ही रहेगी 4 से 5। उस दिन वो फाइनल कॉल रहेगा। मैं ये सब आज इसलिए बात कर रहा कि मेरे को तुम्हारे इनपुट चाहिए। तुम ये टाइम टेबल में क्या चेंज करना है, इसके अंदर और कुछ आगे पीछे करना है क्या, और तुमको और कोई सब्जेक्ट मेरा रह गया क्या। देखो हमारा बहुत डेमोक्रेटिक क्लास है कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं, अभी ऑलीगर की है अभी इंडिया में। ऑलीगर की है, क्योंकि तुम बीजेपी देखो या कांग्रेस देखो या कोई भी पार्टी देखो, डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता है यूट्यूब पे, लेकिन किसी भी पार्टी का कंट्रोल को सिर्फ कुछ इंडिविजुअल के पास ही रहता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम लोग वर्क टुगेदर ग्रो टुगेदर हमारा कंसेप्ट है। हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे से भी इनपुट इसलिए ले रहे हैं कि हमको तुम्हारे पे थोपना नहीं है, जिससे काम करना, जिस तुमको पढ़ना है। एग्जाम मेरे को सरजिल सर को नहीं देना है, तुमको एग्जाम देना है। तो तुम्हारे से हम नहीं पूछेंगे कि भाई तुम कैसा पढ़ाई करेंगे, तो तुम पढ़ेंगे नहीं। कल को तुम बोलेगे सर हमको पढ़ना ही नहीं, तो क्या करेंगे फिर? तो इसलिए तुम्हारे ओपिनियंस हमको मैटर करते हैं। रोहन इंग्लिश का लेक्चर मंडे टू संडे रोज होता है, तो मुझे लगता है 40 मिनट काफी है। लेकिन इसके अलावा जो लोग को बायोलॉजी नहीं उनको हम एक्स्ट्रा लेक्चर देते हैं। और हमारे यहाँ एक एंजेलिना मैम है, कहाँ है वो, गई क्या? एंजेलिना कम यार, वो शॉर्ट एनालिसिस कर दे प्लीज। गेट एडमिटेड इन द मीटिंग एंड स्पीक व्हाट आर यू गोइंग टू टीच। नॉट नाउ, नाउ गेट एडमिटेड इन द मीटिंग फर्स्ट। मैं मीटिंग में आना पहले, ज्वाइन द मीटिंग, लिंक दो उनको। उसमें हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। चैट बॉक्स में शॉर्ट लिखो। शॉर्ट किसको मतलब, शॉर्ट मालूम है तुम्हारे को? एंजेलिना मैम बीए के बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ नया कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया है, जो 11th और 12th हो गया बच्चों का, और हमारे यहाँ बीए के लिए एडमिशन लेंगे, हम उसको सीडीएस के लिए पढ़ाएंगे। एडमिशन लिया तो कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, पुणे यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलेगा। 3 साल का बीए है, और फीस भी कम है। फर्स्ट ईयर बीए का सिर्फ 15,000 फीस है, और कोचिंग फीस 50,000 साल का है। तो 3 साल के लिए बच्चा हमारे पास पढ़ेगा तो 1.5 लाख रुपए फीस है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। और वो बच्चा जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंडिया में आज और अभी जो आएगा उस पर बात कर सकते हैं। तो उसका जो बीए का इंग्लिश है ना, वो एंजेलिना मैम पढ़ाएंगे। तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग मिस एंजेलिना इन फ्रंट ऑफ यू। यस मैम, यू कैन स्पीक। सर आप म्यूट हो गए। Hi, good evening all. Good evening, ma'am. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Good evening, Okay, ma'am. so basically, Good as evening, Bhaiya ma'am. introduced you, SWOT is very important. It plays a very important role in your life. So basically, SWOT. Strength is all your inner ability, which is already there. Weakness is your outbuilt quality, which is in case you are bad at something, where sometimes your weakness becomes your strength. For example, if you have to speak something in front of the audience, and then you wonder, I have stage fear, or maybe I don't have good I'm not confident enough to speak. So that becomes your weakness, which is
already an outside, looking at the atmosphere outside, you build that weakness within you, but it is not your inbuilt quality. So weakness can be converted into strength. And moving on to your opportunity, your opportunities Yeah, are all I that you repeat get. what Angelina, I want to repeat something. See, my weakness is there are four things which is my favorite, Angelina. One is called as intelligent quotient, adversity quotient. लिखो ना chat box पे. मैं हमेशा बोलता हूँ. Social quotient और कौन सा? Emotional quotient. SQ, EQ, IQ and AQ. उसमें मेरा इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा है और मेरा सोशल क्वेश्चन ज्यादा है. मैं समझता हूँ कि मेरा सोशल क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन मेरे इंटेलिजेंट क्वेश्चन से ज्यादा है करके मैं किसी भी टॉपिक पे इम्प्रॉम्प्टू बात कर सकता हूँ. और हम लोग एसएसबी का मकसद भी ये है कि आपके वीकनेस को आपको स्ट्रेंथ बनाना है. कि अगर मेरे पास कोई चीज का वीकनेस है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, सो वी विल हैव वीकनेसेस, बट वीकनेस को जो स्ट्रेंथ बनाता ना, वही एसएसबी में पास होता है. शाहरुख खान का डायलॉग है, हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं. एक बच्चे को पूछा ना कि लास्ट अटेम्प्ट जरा देखो फेल करेंगे तो क्या करेगा, तो उस बच्चे ने आंसर दिया, सर मैं सीडीएस देके वापस आपके सामने आऊंगा. तो उस आंसर के ऊपर उसका सिलेक्शन हुआ. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, you have to be very careful about your weaknesses, and Angelina ma'am and our teachers will help you to convert your weakness into strengths. Yes, continue Angelina. Basically, weakness is just the negativity thought or the things that you see around, but everything can be converted into your strength very easily. If you're not good at speak, but there is a way of how would you improve your speech, how would you improve your reading, your skills will be only helped only if you could practice over it. So weakness is just a word, but then your weakness is to be converted into strength. Opportunities is all that you have around, what you can grab, where how if you're good at math, how could you improve your math subject, and how you could get like trades is again your business. If you're good at some business, yes, you need math there. How do you make profit and loss again? So everything is analyzed through your SWOT, that is SWOT, SWOT analysis. So this is a very important analyze, you have to analyze for yourself. So maybe the coming class, I will take it in more depth and I will introduce you more about it and also help you to analyze as an individual student. So whenever you feel you are bad at something or you are good at something, how could you improve your good thing, your good quality? I will help you out with that. If something where you find you're lacking and that is making you weak, you can let me know about that also. I'll help you to convert your weakness into strength. So basically, overall SWOT is very important. Even if you go for your SSB route, your analysis is done on SWOT. So your strength, weaknesses, opportunity and threats. So Bhaiya, is there anything else? Yeah, you have to say from day one. वो मैम हो ना था ना, वो एजुकेशन बोर्ड लाऊं उसको पहला पेज. डे वन हम लोग है ना, आपको इंटीग्रेटेड करिकुलम पढ़ाएंगे और परसेप्टिव एनहांसमेंट कराएंगे. Okay. Perceptive enhancement मतलब मैं कौन सा बुक पढ़ा रही हूँ? This is what I was talking about. You can write personality enhancement programs. Please write in the chat box. Personality enhancement programs. Personality enhancement program क्या बन गया? एक बुक ले जाओ, मेरे को पढ़ना है, नया मत ले जाओ, पुराना ले जाओ, नया रहने दो, दोनों भी, दूसरा भी कर दो, गायब हो जाएगा. पर्सनालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम में एंजेलिना के जैसे और भी स्टाफ है. उनकी एक बहन है, वो सबसे अच्छी इंग्लिश टीचर है, लेकिन अभी बीमार है, आएगी एनी. तो ऐसे टीचर्स आएंगे तो आपको देखो, मैंने इससे पहले भी कहा है और टॉपिक पे डिस्कशन भी होने वाला है. लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. कौन आवाज करा भाई? लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, मैथ्स के लिए. इसलिए मैंने वो वर्ड यूज किया, मांग्लिश. लिखो, मांग्लिश लिखो बच्चों लोग, चैट बॉक्स में मांग्लिश लिखो. मैथमेटिक्स के साथ इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है. अगर बच्चों को इंग्लिश नहीं आना तो मैथमेटिक्स नहीं आता. तो रिमेंबर दिस, इफ यू आर नॉट गुड एट मैथ्स, यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश. So that also has to be taken into consideration. हाँ, और पॉलिटी और हिस्ट्री का भी वो टाइम दिया जाएगा उसमें. इस पॉलिटी के पास 3 दिन पॉलिटी और 3 दिन हिस्ट्री होगा.
One more thing that I want to mention is whenever you people 35 message है, मतलब ये आ रहा है message पर ये message में आ रहा है. हाँ whenever you people who are staying away और there is offline test भी होता है ना जैसे अभी उसको आपको PDF फॉर्मेट पे हमको भेजना है रिटर्न पेपर. कितने लोगों ने इंग्लिश का पेपर लिखा है? आज भी ऑफलाइन एग्जाम था ना आरएमसी का. You have to write it in a written format and send it to us. So that is also important. Then remember, in the night we are not going to stop Anispedia, walk the path, walk the talk, whatever you say. Where normally what we do is whatever topics are not covered or whatever topics are covered, we'll have a muhasaba. This is a very good Urdu word for it, right? In the chat box, muhasaba. उसका इंग्लिश भी नहीं देखो, पता नहीं मिलेगा क्या. मुहासबा मतलब हम लोग ने दिन भर में क्या पढ़ा है वो टाइम पे हम लोग हमारा ओपन डिस्कशन रहेगा कि मैं ऐसा पूछूंगा अभी आज सना मैम ने बायो में क्या पढ़ा है, टेस्ट हुआ क्या, केमिस्ट्री में शफाक मैम ने क्या पढ़ा है, डॉक्टर इनामदार सर ने क्या पढ़ा है, फिजिक्स में अभी असद सर वेक्टर का हो गया, अभी उनको मैथ्स का क्या टॉपिक दो. देखो हम फिजिक्स के टीचर से मैथ्स का टॉपिक करा रहे. आज पार्शियल फ्रैक्शन कराया मैंने अफरोज सर से जो 12th में इंटीग्रेशन में, लेकिन 11th में बच्चों को मालूम होना चाहिए. मैथ्स में शाहरुख सर ने क्या करा है, एनटीए करके एक ऐप होता है, डाउनलोड करो. देखो मुहासबा का स्पेलिंग रॉन्ग सर, मुहासबा MUHA मुहासबा रिक्ता करके साइट उसमें मिलेगा आपको. और ए भी टाइप करो, एनटीए करके एक अभ्यास, एनटीए अभ्यास करके ऐप है, वो डाउनलोड करो बच्चों लोग. अभी एनटीए एक एजेंसी है जिन्होंने जेडब्ल्यू और नीट का पेपर बनाते हैं. तो वो एजेंसी को गवर्नमेंट ने 13 करोड़ रुपया उन्होंने स्पेंड किया. अभी 1 से लेकर 6 तारीख तो जो एग्जाम चला ना जेडब्ल्यू का, 13 करोड़ रुपीस सैनिटाइजर ये वो सब लगाया, सब कुछ. और वो बॉडी है जो अभी आगे चल के सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पेपर बनाएंगे, यूपीएससी का भी. और उनको बहुत पैसा उनके पास. अभी वो नीट का फॉर्म है, मेरे को कोई पानी लाना भाई, 1500 रुपए में नीट का एक फॉर्म बेचते हैं. तो अगर 12 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, कितना पैसा आ गया उनके पास, जरा कैलकुलेट करो जल्दी से. जो पहला बताएगा वो एनडीए पास होगा जल्दी. एक फॉर्म 1500 रुपए का है, 12 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं. तो 12 लाख इंटू 1500 कितना पैसा आया उनके पास. जो पहला बताएंगे एनडीए पास, जल्दी कितना करोड़. मेरी आवाज नहीं आ रही. 1 billion 800 million. हाँ चलो 18 करोड़ 180 करोड़. हाँ 180 करोड़. तो 180 180 करोड़ में से 18 करोड़. करोड़ खर्च करके इतना पैसा. कैसा प्रद्युम्न दिमाग कैसा लगाया मैंने, समझा क्या? मैंने नहीं, नीट वालों ने. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. तो ये लोगों ने ना, तुम लोग अभी 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 डाउनलोड करो, अभी के अभी डाउनलोड करो एनटीए अभ्यास ऐप. उसका क्वेश्चन भी रहता है, आंसर भी रहता है और सॉल्यूशन सेट भी रहता है. और डंके की चोट पे हम बोलते हैं यूट्यूब पे कि हमारा आंसर और हमारा सट्टा उनसे भारी है. तो कौन भारी हो गया प्रद्युम्न? आप. अच्छा मैं तुमको ये भी बोलूंगा, जाओ ऑनलाइन में जाके देखो, ऑनलाइन पे लोग वो पेपर को सॉल्व करते हैं. और कभी हमारे लेक्चर में भी और रात में हम लोग भी इसको लेक्चर सॉल्व करते हैं. कल मैंने एक क्वाड्रेटिक का सम किया था 5 मेथड से. मेरे मेथड से किया था, आशा मैम के मेथड से किया था, अफरोज सर के मेथड से किया था, उदय सर के मेथड से किया था, और डेस्मॉस में शाहरुख सर के मेथड से किया था. तो एक सम को कितने मेथड से किया हम लोगों ने? 5 मेथड से. मुझे नहीं लगता कहीं पे भी सॉल्व होता है. वो भी मैंने यूट्यूब पे डाला है 4 से 5 के बीच में. देखो याद है कल या परसों की बात है, ax² + bx + c मैक्सिमम मिनिमा, उल्टा ग्राफ, पैराबोला का ग्राफ. हाँ परसों किया था. तो हम लोग इसके ऊपर अभी रिसर्च कर रहे हैं. तो हमने देखा कि बहुत सारी चीजें हम जो करते ना वो यूट्यूब पे भी नहीं है और ऑनलाइन में भी नहीं है. तो इसको हम लोग सट्टा बोलते हैं, जुगलबंदी बोलते हैं, मारामारी बोलते हैं, चांडाल चौकड़ी बोलते हैं. इस पर हमने लेक्चर्स भी लिया. ये सब पेटेंटेड है. और मैं ओपनली बोल रहा हूँ तुमको, तुम खुद देखो, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ करके. तुम एनटीए ऐप डाउनलोड करो, जो चैप्टर तुम्हारा हुआ अभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉग हुआ, उसमें से सम करने की कोशिश करो. या तुम्हारा क्वाड्रेटिक हुआ, और कौन सा चैप्टर तुमने पढ़ा 10th में, हाइट्स एंड डिस्टेंस हुआ. तो देखो तुम लोग वो सब क्वेश्चन सॉल्व करने को देखो, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का. अभी से देखो, क्योंकि अभी से तुम पढ़ेंगे तो जेडब्ल्यू का भी एग्जाम दे सकते हो, नीट का भी एग्जाम तुम दे सकते हैं. समझ में आया क्या? सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. तो अभी से तुमको क्वेश्चन तुम्हारे डाउट पे जाना चाहिए. वो उससे क्वेश्चन तुमको तुम्हारे टीचर्स को तुमने पूछना चाहिए
ऑन डिमांड में और हैंड होल्डिंग में भी। संडे को दोपहर के बाद कोई क्लास नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। 2 बजे के बाद नहीं, सुबह टेस्ट होगा या हैंड होल्डिंग लेक्चर्स होंगे संडे को, और 2 बजे के बाद कोई क्लास नहीं। कोई मेरा जो भी स्टूडेंट है एसएसबी का, कोई लेक्चर है, कोई हम रिसोर्स पर्सन को बुलाएंगे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे, बहुत भारी आदमी रहेगा उस सब्जेक्ट पर, उसके ऊपर बात करने लगाएंगे। लेकिन दोपहर के बाद छोड़ देंगे, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन है, हम लोग रहेंगे यहाँ पे। तो जो आपको अपना, जिनको अपना ये दिखाने का है, क्या बोलते हैं, बुक्स दिखाने का है, चेक करा के लेना है, सट्टा वो सब, क्या तू क्या बोल रहा है? हाँ हाँ, वो टैलेंट दिखाने के लिए 4 से 5 का लेक्चर दिया ना तुमको। अरे 4 से 5 में तुमको किसी भी टॉपिक पे अंडर द सन तुम बात कर सकते हैं। इतना है कि वो यूट्यूब पे जो जाता रहा तो कंटेंट सही होना चाहिए ना, क्या बच्चे भी देख सके, ऐसा गलत कंटेंट नहीं जा सकते। और अभी हम लोगों ने एक नया ऐप भी स्टार्ट किया है, वो वीमो के ऊपर होगा, जो वो लोग ही हमारा लेक्चर दे सकते हैं जिनको हमारा क्लास में सब्सक्राइब किया। ठीक है, और कुछ बोलना है बच्चे लोग? एनीथिंग, लास्ट क्वेश्चन, anything else you want to say? Any topic which is not covered? I hope I spoke, Shardil spoke about everything. Yes, show me your PPT. इसके बाद next क्या? आगे वाला, पहले पीछे का दिखाओ। पीछे वाला जाने का, पीछे नहीं, स्टार्टिंग से। हाँ, पहला पेज देखो, ये याद रखो, ये अनीस क्लासेस स्पेसिफिक, सब लोग चैट बॉक्स में लिखो, स्पेसिफिक इज टेरिफिक। मैं शर्जील सर को ये बात करने लगाया कि हम लोग एनडीए पढ़ाते हैं, और एनडीए के साथ जेडब्ल्यू और नीट है। एक आदमी गाय लेता ना, गाय, वो गोबर के लिए लेता क्या दूध के लिए लेता? भाई लिखो जरा चैट बॉक्स में लिखो, एक आदमी गाय खरीदता या बकरी खरीदता, तो गाय गोबर के लिए खरीदता कि दूध के लिए खरीदता? दूध। अभी मेरे को बताओ, दूध एनडीए है मेरे हिसाब से, और जेडब्ल्यू और नीट मेरे लिए गोबर है। सबको क्लियर है? अनीस क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं, प्लीज उसको तुम उल्टा सीधा मत ये करो, मैंने जो एग्जांपल दिया है। तो अनीस क्लासेस में तुम एडमिशन लेते ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारा जेडब्ल्यू और नीट हो जाता है। ये बोल रहा हूं, फालतू में 1.5-2 लाख रुपया तुम जेडब्ल्यू और नीट में स्पेंड मत करो, ये बात कर रहा हूं मैं। जो बच्चा हमारे लिए एनडीए के लिए एडमिशन लेता है, उनमें उनका जेडब्ल्यू और नीट भी हम पढ़ाते हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे 1 घंटा। कितने लोगों को समझ में आया? तो लिखो जरा, चमका लिखो, चमका। लोग बेवकूफ बनाते हैं यार, वो ये करते वो नहीं करते। वहां इंडिया का क्लास है, वहां जेडब्ल्यू नीट नहीं पढ़ाएंगे, तो उनके लिए ये था। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं तुम्हारा इंडिया का क्लास है, तुम जेडब्ल्यू नीट कब पढ़ाएंगे? हाँ, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, बहुत देर बैठना पड़ता। हम लोग माँ बाप से ज्यादा टाइम देते बच्चों को, उसके लिए मेरे पास कोई भी शक नहीं है। तुमको ज्यादा देर बैठने का नहीं है तो अनीस क्लासेस ज्वाइन मत करो, बहुत क्लासेस है। किसी ने बोला गोबर भी यूजफुल है, बोले ये भी बता दो हमने। हाँ, अच्छा, गोबर भी यूजफुल है मालूम? ये छत्तीसगढ़ में एक चीफ मिनिस्टर है, उसने क्या क्या आइडिया बोले क्या, कि जिधर भी गोबर मिलेगा ना, लेके और 2 रुपए मिलेगा किलो पे, तो 2 रुपए किलो गोबर बेचने लगा। तो जितने भी कैटल्स है ना, वो गोबर को भी यूज करने लगे, तो गोबर का भी फायदा हुआ मैन्योर के लिए, और लोग कैटल को मारने भी नहीं लगे, क्योंकि बचाने लगे, उनको खाना खिलाने लगे। तो अच्छा खाना देंगे तो अच्छा गोबर देगा ना, उसके पैसे मिलेंगे। अरे बात समझ में आया क्या? हाँ, तो गोबर भी यूजफुल ही है, क्योंकि अगर नीट जाएंगे तो भी एफएमसी, और हम लोग जेडब्ल्यू से टेक्निकल एंट्री जाएंगे। लेकिन मैं कोई बात समझा रहा था, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर क्या बोलते हैं, अरे अनीस क्लास में सिर्फ एनडीए एनडीए होता, और स्टेट बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का पढ़ाते नहीं, और जेडब्ल्यू का पढ़ाते नहीं, नीट का नहीं पढ़ाते। उसके लिए मैंने बात किया, ठीक है। मार्किंग स्कीम तो सब सर ने बता दिया, ये जेडब्ल्यू का भी बताया। जेडब्ल्यू में भी अभी 5 क्वेश्चन आपको लिखना पड़ता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू का पढ़ना, रिटर्न। और मैं प्रॉमिस करता हूं, एनटीए का ऐप पे जितने क्वेश्चन आया, सारे के सारे हम क्लास में सॉल्व करेंगे। उसके अलावा भी जो भी एग्जाम से, सारे एग्जाम को हम बिठाएंगे। कल एक लड़का मैं बताया ना, सूर्यवंशी, गरुड़ कमांडो बन गया, तो उसकी मम्मी ने बहुत तारीफ की, उदय सर बता रहे थे कि वो हमारे पास आए, हमने ऐसे फॉर्म भरा देते, हो गया। अभी हम लोग तो टीचर को नहीं छोड़ते, हमने शाहरुख सर को सेंटा का एग्जाम लिखाया, तो शाहरुख सर सेंटा क्वालिफाइड रहने से शाहरुख सर को भी बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिले, यूएसए के बच्चों को पढ़ा रहे। तो ये अपॉर्चुनिटीज हम सबको देते हैं, वर्क टुगेदर ग्रो टुगेदर हमारी पॉलिसी है। अभी ज्यादा बोलता नहीं मैंने, लेकिन और कंट्रोवर्सी हो जाएगा। और क्या इसमें? हाँ, अभी देखो ना, नीट पढ़ते हैं ना, फिजिक्स तो केमिस्ट्री तो कॉमन है, एनडीए में फिजिक्स कितने क्वेश्चन आते हैं? 25। जेडब्ल्यू में भी 25 क्वेश्चन आते हैं, है ना। नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं? 45, और केमिस्ट्री है।
और बायो हम लोग एनडीए के लिए बायो पढ़ा, तो बायो के टीचर हमारे पास बहुत है, 3 बाहरी बायो टीचर है हमारे पास। एक मिताली मैम है, एक आदिति मैम है, और हमारे पास सना मैम है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन में, और जलीसा मैम भी है। हर एक सब्जेक्ट के लिए 4-5 टीचर है। अगर कोई बच्चा कंप्लेन करता है कि टीचर नहीं पसंद है, तो हम टीचर चेंज करते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट नहीं चेंज करते। अच्छा, हम टीचर चेंज करते हैं, इसका मतलब हमारा टीचर कॉम्पिटेंट ये नहीं है, हर एक का समझाने का तरीका अलग है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भी होता है, बट हमारा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है। चैट बॉक्स में लिखो स्टूडेंट सेंट्रिक। नेक्स्ट के लिए हाँ, ओएमआर शीट में लिखने का प्रैक्टिस भी होना चाहिए, सैंपल शेड्यूल भी बताया। ये मेरे को इस पे इनपुट चाहिए तुम्हारा, प्लीज मेरे पर्सनल नंबर पे 9890-826-344। और ये देखो, जेडब्ल्यू हार्ड है कि एनडीए हार्ड है? जेडब्ल्यू में एक क्वेश्चन को 2.5 मिनट मिलता है, एनडीए को एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिलता है। तो कौन सा हार्ड है, एनडीए हार्ड है कि जेडब्ल्यू हार्ड है? एनडीए हार्ड है। और जो लोग ओबीसी एससी एसटी वाला, अगर मैथ्स पढ़ लिया एनडीए के लिए और जेडब्ल्यू में एनडीए का पूरा क्वेश्चंस कर लिया, तो भी वो क्वालिफाई हो जाता, उसको टेक्निकल एंट्री आ जाता। आनीस क्लासेस मैथ्स के लिए फेमस है। थैंक यू बॉयज, ज्योग्राफी का लेक्चर है। सॉरी रिंकू, आई टुक योर 5 मिनट्स। सब लोग ज्योग्राफी लेक्चर पे जाओ। 1 से 3 हिस्ट्री का लेक्चर होता है, उसमें भी जाते हैं। 11 के बच्चे लोग को बोल रहा हूं मैं, मार खाएंगे। और नोट्स बनाओ, नोट्स पे पढ़ने बदड़ेगा मैं, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, नोट्स बना के लेके आओ। हाँ।